आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 118, एक मिनट। इससे पूछा है नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव इंक्लूड। नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव इंक्लूड ऑप्शन 1, bi-weekly supplementation of iron and folic acid to 6 to 60 month of age. Iron and folic acid 2 times per week for 6 to 60 month children. Option 2, bi-weekly supplementation of iron and folic acid to pregnant and lactating women. Iron and folic acid twice per week for pregnant and lactating females. Option 3, bi-weekly supplementation of iron and folic acid to adolescent girl. So for iron and folic acid bi-weekly for adolescent girls. Option 4, all of the above are part of initiative. ऑल ऑफ द अबव। फिर से देखिए, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव इंक्लूड आयरन एंड फोलिक एसिड बाई वीकली फॉर 6 to 60 मंथ चिल्ड्रेन, आयरन एंड फोलिक एसिड बाई वीकली फॉर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग फीमेल्स, आयरन एंड फोलिक एसिड बाई वीकली फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बाई वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड फॉर 6 to 60 मंथ चिल्ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 119 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 119, not true about strategic plan for malaria control 2012 to 2017. Strategic plan for malaria control 2012 to 2017, all are true except option 1, objective is API less than 1 per 10,000. Objective is API less than 1 per 10,000. Option 2, 50% reduction in mortality by 2017. 50% decrease mortality by 2017. Option 3, annual incidence less than 10 per 1000 by 2017. Annual incidence less than 10 per 1000 by 2017. Option 4, complete treatment to at least 80% patients. Complete treatment to 80% patient. फिर देखिए, strategic plan for malaria control 2012 to 17 include all except objective is API less than 1 per 10,000, 50% decrease mortality by 2017, annual incidence less than 10 per 1000 by 2017, a complete treatment to 80% of patient. And the right answer is C, that is annual incidence less than 10 per 1000 by 2017. ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी के अंदर नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 क्या बोल रहा है? रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर इज कॉज्ड बाई ऑप्शन 1, रिकेट्सी, ऑप्शन 2, रिकेट्सिया टाइफी, ऑप्शन 3, रिकेट्सिया कोनोरी, ऑप्शन 4, रिकेट्सिया आकारी। फिर से देखिए, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर कॉज्ड बाय रिकेट्सी, रिकेट्सिया टाइफी, रिकेट्सिया कोनोरी, रिकेट्सिया आकारी। एंड द राइट आंसर इज रिकेट्सिया। क्वेश्चन 121 देखेंगे। टेक ट्रांसमिट which disease? Option 1, scrub typhus. Option 2, rickettsial pox.
pox. Option 3, relapsing fever. Relapsing fever. Option 4, yellow fever. Yellow fever. फिर देखिए tick transmits which disease? Scrub typhus, rickettsial pox, relapsing fever या yellow fever. And the right answer is relapsing fever. Relapsing fever. Tick transmits relapsing fever. क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 122 क्या पूछ रही है लोग? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन 1, डिक्रीज TFR to 2.1. डिक्रीज TFR to 2.1. ऑप्शन 2, एक मिनट, strengthen health infrastructure. Strengthen health infrastructure. Infrastructure. Option 3, stabilize population by 2045. Stabilize population by 2045. Option 4, unmet need of contraception. Unmet need of contraception. Contraception. फिर से देखिए, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज डिक्रीज TFR to 2.1, strengthen health infrastructure, stabilize population by 2045, unmet need of contraception. And the right answer is stabilize population by 2045. Stabilize population by 2045. क्वेश्चन 123 देख रहे हैं. क्वेश्चन 123, व्हाट इज रोल बैक मलेरिया स्ट्रेटेजी? व्हाट इज रोल बैक मलेरिया स्ट्रेटेजी. ऑप्शन 1, एक मिनट, स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम. strengthen health system. Option 2, use insecticide net. Use insecticide nets. Option 3, training of healthcare worker. Train healthcare workers. Option 4, give presumptive treatment. फिर से देखिए, what is rollback malaria strategy? Strengthen health system, use insecticide net, train healthcare worker या give presumptive treatment. And the right answer is A, B and C. That is strengthen health system, use insecticide net and train healthcare workers. क्वेश्चन 124 देखेंगे. क्वेश्चन 124, ट्रू अबाउट SSPE. क्या क्या होती है? ऑप्शन 1, कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स. कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स. Option 2, it is early complication of measles. Option 3, virus cannot be isolated easily. इधर लिखते हैं virus not isolated easily. Option 4, no antibody in CSF. फिर से देखिए, ट्रू अबाउट SSPE, कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल, अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल, वायरस नॉट आइसोलेटेड इजीली, नो एंटीबॉडी इन CSF. एंड द राइट आंसर इज C, वायरस नॉट आइसोलेटेड इजीली. क्वेश्चन 125 देख रहे हैं. यहाँ पे पूछ रहे हैं, एक मिनट, क्रॉनिक कैरियर स्टेट इज सीन इन. क्रॉनिक कैरियर स्टेट seen in. Option 1, measles. Option 2,
influenza. Option 2, influenza. Option 3, hepatitis B. Option 3, hepatitis B. Option 4, pertussis. Option 4, pertussis. फिर से chronic carrier state seen in measles, influenza, hepatitis B, pertussis. The right answer is hepatitis B. एक मिनट. The right answer is hepatitis B. Chronic carrier state seen in hepatitis B. क्वेश्चन 126 देखेंगे. क्वेश्चन 126 क्या है? Which is indirect mode of transmission? Which is indirect mode of transmission? Mode of transmission. Option 1, hand contact. Option 1, hand contact. Option 2, through placenta. Through placenta. Option 3, vector borne. Option 3, vector borne. Option 4, dog bite. Option 4, dog bite. फिर से देखिए, which is indirect mode of transmission? Hand contact, through placenta, vector borne, dog bite. And the right answer is vector borne. The right answer is vector borne. Question 127 देख रहे हैं. Question 127. For elimination of measles, vaccine coverage should be in successive birth cohort. For measles elimination, vaccine coverage should be option 1, more than 70%. Option 2, more than 80%. Option 3, more than 90%. Option 4, more than 95%. For measles elimination, vaccine coverage should be more than 70%, more than 80%, more than 90%, more than 95%. That answer is more than 95%. Question 128 देंगे. For tuberculosis screening, which test is done? Test done for TB screening. Option 1, एक मिनट, sputum microscopy. Option 1, एक मिनट, sputum microscopic examination. Option 2, sputum culture. Option 2, sputum culture. Option 3, tuberculin test. Option 3, tuberculin test. Option 4, lymph node biopsy. Option 4, lymph node biopsy. Test done for TB screening: sputum microscopy, sputum culture, tuberculin test, lymph node biopsy. Right answer is tuberculin test. क्वेश्चन 129 देखेंगे. यहाँ पे बोल रहे हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर आशा आर ऑल एक्सेप्ट. सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर आशा आर ऑल एक्सेप्ट. ऑप्शन 1, women. Option 1, female. Option 2, village resident. Option 2, village resident. Option 3, educated up to class 5. Class 5. Option 4, literate. Option 4, literate. कौन सा आपकी नहीं होनी चाहिए? एंड द राइट आंसर इज एजुकेशन अप टू क्लास 5 नहीं होती है. क्वेश्चन 130 देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 130 क्या पूछ रहे हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी एज ग्रुप फॉर वैक्सीनेशन ऑफ जर्मन मीजल्स. फर्स्ट प्रायोरिटी एज ग्रुप